Assalamu alaikum. So in this very session, it's part 2 of the same session, as we've decided that we are going to discuss the 100 ultimate MCQs, which will help you to excel, inshallah, in tomorrow's exam. So if you know everything from these 100 MCQs, I mean the logic that why this one is correct and why other 3 are not correct, मुझे कोई doubt नहीं है कि you all are going to score, inshallah, A star, since we have done a lot of effort in the past, starting from, I mean, जब हमने session start किया था, I think 3 months back. So बिल्कुल scratch से हमने start किया. We did entire syllabus from the scratch, doing ATPs, structured questions, and now is the day when we have exam tomorrow. And I'm sure हमने जितनी practice की in the past, whether it is ATP past papers, MCQ past paper, theory past paper, all these are just to help you guys with understanding of the basic of chemistry. Starts from states of matter to bonding, electrolysis, periodic table, chemical reactions, rate redox, reversible. कल question आने वाले हैं उसके, metals के galvanizing and sacrificial protection, rusting का formula आने वाला है कल आपको, इसलिए make sure कि आप उसको review कर लें. And how to stop rusting, yes, rusting को stop करने का, rusting होने की, what are 2 conditions, and then air and water periodic table के trends, what are the pollutants, air pollutants and water pollutants, and how do we purify the water, and how do we test the presence of water with anhydrous, cobalt and copper 2 chloride. And then organic chemistry, in which there will be a question from crude oil, there would be a question from alkene. When I say alkene, addition reaction, whether it is addition with hydrogen, addition with steam, addition with bromine, and importance of each reaction. And then we have alcohol and carboxylic acid, how alcohols are oxidized with 2 methods, bacterial oxidation and complete oxidation with acidified KMnO4, goes from purple to colorless. And esters, I mean naming of esters, uses of esters, yes, and then polymers. मैंने आपको बताया हुआ कि there will be a question from cations and anions, so make sure आप उसको review करें. I hope आप सबने किया. Okay, so if you have any question from the previous worksheet, please let me know. I'm glad that you have no question. Okay, let's get started. Let me join from the other device. I see. Time management is something which you all must give respect. अब तो आप senior हैं, time management में भी सब लोगों ने माशाल्लाह इतने सारे पेपर solve किए हैं. I think अब तो आपको उसमें कोई problem नहीं होना चाहिए when it comes to time management. Yes. चले जी. Ready everyone? Ready everyone? Ready everyone? Okay. Good, Ahmed. I like your confidence, man. So we've done with first 50 MCQs, and now we will be starting with 51, and we will, solve all other remaining 50 MCQs, starting with this beautiful question. Okay, this beautiful question. Oh. Okay. So let's read the statement says. Okay, let's read the statement. Just a second. It's a detailed worksheet. Huge amount of questions inside. Which statement about the gases in the atmosphere is correct? So we are looking for a correct statement. Photosynthesis adds oxygen to the atmosphere. Now we know that the photosynthesis, what exactly happens in carbon dioxide reacts with water to form glucose, C6H12O6, and it produces oxygen. So it adds oxygen. I think this statement is correct. Yep. And we need UV light and chlorophyll as condition. Methane in atmosphere depletes oxygen. Methane is a greenhouse gas. It doesn't deplete ozone. Catalytic converter reduces carbon monoxide to carbon. So carbon monoxide को carbon di में तो change करते हैं. But do you think this change is reduction
Is this reduction from monoxide to dioxide? It's oxidation. Carbon monoxide is a pollutant. It's not a pollutant. It is a pollutant. It's a toxic gas, in fact, but it has nothing to do with acid rain. It is a neutral gas. It's a toxic gas. It is not an acidic gas. Correct? 4 test tubes are set up as shown. We have W, X, Y, and Z. In test tube W, we have aqueous silver nitrate, copper 2 nitrate, lead 2 nitrate, and sodium nitrate. What is the effect of adding hydrochloric acid? Okay. Let's assume हमने इसमें HCl add कर दिया. तो क्या होगा? Silver ion will combine with chloride ion to form AgCl. We know all chlorides are soluble except LS. Lead chloride and silver chloride, they are insoluble. So you would see white precipitate. What is the effect? So precipitate forms. So W में there will be a precipitate. Copper chloride बनेगा. I mean, you will get copper 2 chloride. जब इसमें भी HCl डालोगे तो you will get copper 2 chloride. तो copper 2 chloride is soluble in water. मैंने chloride की सिर्फ 2 exceptions बताई हैं, lead और silver. So again, all 3 entries यहाँ तक B, C, D ठीक चल रहा है. Lead, it will form lead chloride when you put HCl in lead nitrate. तो lead 2 chloride is insoluble. इसका मतलब ये है कि these two are not options. D भी निकल गया. Okay. अब यहाँ पे NaCl बनेगा. HCl डालोगे तो you'll get NaCl and so all sodiums are soluble. तो C भी निकल गया क्योंकि ये तो कह रहा है precipitate. तो B की सारी entries ठीक है. It will form white PPT, no white PPT, white PPT, and no white PPT. So B is correct. Again, a clear understanding of the salt solubility rule are highly important. So I'm sure I'm connected. मेरी screen नजर आ रही है ना सबको? Internet connected है? Yes. Okay. Thanks so much. The proton number of cesium is 55. Proton number of cesium is 55. Compared to lithium, cesium is in group 1. In fact, it is the second last element of group 1. Lithium is the first element in metals. Hydrogen to metal nahi hota na. The melting point of cesium is lower because we know that as you go down, the melting point decreases. So cesium has a low melting point, has a lower melting point. And the reaction of cesium with water is more. So down the group, reactivity increases. This is more reactive. So it would be more vigorous. The number of valence electron in cesium is the same compared to lithium because they are in the same group, not greater. D is correct. All 4 entries of D is correct. It was easy. But again, as I said, you need to read the full statement, underline the important words, and then connect with the options. Always start with, मैं तो D से start करता हूँ, आपकी मर्जी. 3 correct statements about aluminum are listed. So we have correct statement about aluminum. Aluminum is the most common metal. Do you think aluminum is the most abundant? Aluminum is most abundant? I don't think so. It is costly to extract aluminum from its ore. Do you think it is costly? What method do we use to extract aluminum? Since it is present above carbon, it is extracted with electrolysis. And we know electrolysis, the disadvantage of electrolysis is it's very expensive. So this statement makes sense. The world's supply of bauxite is limited. I mean, since इसके ये minerals की form में होती है, ores की form में, तो it's limited. ये ऐसा तो नहीं है कि it's a renewable source. It's not a renewable source. तो it's a limited supply है. तो of course I think ये बात भी ठीक है. Where is 2 and 3? B must be correct. Yes. Iron is extracted from ore hematite. What's the formula of hematite? Iron 3 oxide in a blast furnace. Which statement about this extraction is correct? Silicon dioxide is an impurity, is a basic oxide. Silicon is a non-metal. It's an acidic oxide. Non-metal oxides are acidic.
Limestone is calcium carbonate. It decomposes in the blast furnace to produce carbon monoxide. Do you think it produces carbon mono? Limestone, which is calcium carbonate, is thermally decomposed to give you calcium oxide and carbon dioxide. So it doesn't produce carbon mono. Incorrect. At the bottom of the blast furnace, a layer of molten iron floats on the top of the molten slag. देखो ऊपर मोल्ट जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो ना उसमें से, लेट्स से यहां पे, तो ऊपर आपके पास मोल्टन आयरन होता है और नीचे स्लैग होता है, मोल्टन स्लैग. तो उसने कहा है द बॉटम द लेयर ऑफ मोल्टन आयरन फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ द मोल्टन स्लैग. एयर इज ब्लोन. सो करेक्ट अरेंजमेंट है इसकी. At the bottom of the furnace, a layer of molten iron floats on the top of the slag. So, iron and molten slag. So, slag का फॉर्मूला क्या है? CaSiO3. Yes. इसको जरा अभी एक सेकंड हम होल्ड कर लेते हैं बिकॉज थोड़ा सा इसमें ए को देख लेते हैं. दैट मेक सेंस. एयर इज ब्लोन इन द ब्लास्ट फर्नेस टू रिएक्ट विद कार्बन. दैट इज अ मोर. तो इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट आयरन विच फ्लोट्स. आयरन नीचे वाली लेयर होती है, स्लैग ऊपर वाली लेयर है. बिकॉज ए इज अ मोर अप्रोप्रिएट ऑब्वियस आंसर. वी नो दैट एयर इज ब्लोन टू बर्न द कार्बन टू गेट यू कार्बन डाई, and then carbon die is further treated with carbon to get you carbon mono. Carbon mono is treated with iron 3 oxide. It's a reduction reaction to get you iron which contain acidic impurities and carbon dioxide again. फिर calcium, फिर ये वाला reaction होता है लास्ट में. The calcium oxide react with silica which is this acidic impurity to get you slag. ठीक है, so A is a more appropriate answer and is the correct answer. Which statement about the gases in the atmosphere is correct? So correct statement about the gas. ये तो repeat नहीं हो गया. Photosynthesis add oxygen. ये तो repeat हो गया. I don't know why. Different metals reacts with water in different ways. Different metals reacts with water in different possible ways. Please check this MCQ everyone. Shabash. Number 57. हो गया? Okay, sodium react with cold water to produce aqueous sodium oxide. Look, group 1 metals हैं, whenever they react with water, they form hydroxide. They are very reactive. They form hydroxide and hydrogen gas. So they do not form oxide. अगर वो cold water से react कर रहा है तो they must form hydroxide. Yes, if it is reacting with steam instead of water, if the same metal is reacting with steam, then you can expect a metal oxide and hydrogen gas. यहाँ पे तो कोल्ड वाटर है. इनकरेक्ट. मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो मैंने कहा जब भी मेटल ग्रुप 1 और 2 की स्टीम से रिएक्ट करेगी तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट द ऑक्साइड ऑफ द सेम मेटल. ये भी इनकरेक्ट. आयरन रिएक्ट स्लोली विद स्टीम टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड लेयर ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन. ये बात बन सकती है. आयरन रिएक्ट स्लोली. आयरन है, ये स्टीम से रिएक्ट करेगा, H2O gases. Since iron is less reactive, ना reactivity series में it is very low. तो less reactive का मतलब it loses electron very slowly. तो बहुत slow react करेगा compared to the other metals. Although इसका reaction भी बहुत slow नहीं होता है. तो ये कौन सा reaction है? ये तो एक rusting type reaction नहीं है where it react with air and moisture. So it form iron hydroxide, iron oxide, Fe2O3, which is the formula of rust, hydrated iron and hydrogen gas. I think this makes sense. Calcium does not react with cold water. मुझे बताएं calcium होती कहाँ पे? Calcium is a very reactive metal, you know, so it does react with cold water to form calcium hydroxide and hydrogen gas. B is correct. Metal X is more reactive than zinc, but less reactive than sodium. Okay, let's write the reactivity series. We have carbon here. So here we have zinc. उसने कहा metal X is more reactive than zinc. We have zinc over here and we have sodium over here. इनको यहाँ पे लिखें. So metal X is more reactive than zinc and less than sodium.
तो हमने बीच में लिख दिया। व्हाट इज द बेस्ट मेथड? मोर रिएक्टिव देन जिंक का मतलब है कार्बन से ऊपर ही है, ठीक है। तो कार्बन से ऊपर वाली को कैसे निकालते हैं फ्रॉम इट्स और? तो इलेक्ट्रोलिसिस ही करेंगे, हीटिंग में ऑक्साइड कार्बन हाइड्रोजन, ये तो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ऑक्साइड ऑफ एक्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे डिबेट हो सकती है। सो देखो, आपको याद है जब हमने एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन की थी, एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन कैसे की थी? क्या हमने उसका एक्वस सॉल्ट लिया था या उसके मोल्टन ऑक्साइड को हमने लिया था? वी एडेड इन क्रायोलाइट टू लोड द मेल्टिंग पॉइंट एंड देन, so it is actually something aluminum, that's considered as aluminum. Aluminum is extracted from its oxide, not from its aqueous solution, क्योंकि इसका जो aqueous solution है वो तो insoluble है। metal oxides are normally insoluble in water, so it has to be molten oxide, molten, क्योंकि solid की तो कर नहीं सकते ना electrolysis, correct? Electrolysis of aqueous solution of salt, so that is an incorrect method. I mean, तो आपने इसको as a treat करना है very similar to aluminum. Steel is often galvanized. तो steel galvanizing का मतलब क्या होता है? Coating of zinc. Yes, coating of zinc. Which statement about galvanizing is correct? Galvanizing makes a steel alloy. Galvanizing has nothing to do with the alloy formation. Galvanizing provides a sacrificial protection. ये बात ठीक है. We paste a layer on the top. That layer corrode itself saves the less reactive underneath. Galvanizing coats a layer of zinc onto the steel. ये बात भी ठीक है. So 2 and 3 C must be correct. Which statement about corrosion of iron are correct? Corrosion of iron. Yes. Corrosion can be prevented by coating iron with zinc. तो ये galvanizing की बात है, ये बिल्कुल ठीक हम करते हैं. We do coat zinc, iron with zinc. Corrosion only occurs in the presence of, yes, ये दोनों condition है. Corrosion happens in air and water. In the presence of air and water, this is also correct. 1 and 2 दोनों ठीक है, तो फिर यही है ना, और तो किसी ऑप्शन में है नहीं. Rust is not an alloy. Rust is a chemical compound. It's a compound of hydrated compound होता है. Sacrificial protection occurs when iron is connected to less reactive. No, in sacrificial protection we attach it with a more reactive metal. Which statements are correct? Which statements are correct? Chlorination is used to remove unpleasant taste. Unpleasant taste के लिए हम क्या ऐड करते हैं? Carbon, which is called charcoal, not chlorine. Chlorination kills the bacteria, microorganisms. Desalination can be achieved using distillation. Desalination where you remove the small dissolved particles from the water. So that is as simple as distillation. The presence of phosphates in the water and soil encourage the plant growth. Yes, I think phosphate and nitrate causes what do we call eutrophication. So they encourage the plant growths. Both 2 and 3 C must be correct. Yes. आगे आ जाए. Number 62. Nitrogen dye is a dark brown gas. This is a dark brown gas. Am I connected? आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, sir. Yes. Nitrogen dioxide is a dark brown gas. This is nitrogen dye. Decomposes as shown to produce NO and oxygen. And when it decomposes, it creates colorless gases. So agar it's a reversible reaction, that means if you shift equilibrium to the right, it become more colorless, color will fade. And if equilibrium goes to the left, it become more darker. I think this is related to equilibrium. The diagram shows the glass flask containing a mixture of 3 gases. NO2 a brown gas, NO a colorless gas, oxygen a colorless. तो आपके पास ये तीनों gases हैं, ठीक है? The mixture is kind of pale brown. You see the mixture here, and this is inlet for the gas. More oxygen is forced into the flask. तो मुझे ये बताएं कि जब आप ज्यादा ऑक्सीजन इसमें आपने डाली तो आपने किस साइड को इंक्रीज किया? You've increased the product side. Equilibrium किस तरफ जाएगा? Equilibrium was at closed system, you injected more oxygen. So equilibrium will shift to the side with less concentration. Equilibrium तो left पे चला जाएगा. तो जब left पे जाएगा तो आपके पास ज्यादा brown वाली चीज बनेगी.
तो कलर उसका क्या हो जाएगा? इट मस्ट बिकम मोर डार्कर, pale brown, colorless, no change. There will be a change, and the change in such a way that it shift to the left side, which mean a more brown, darker brown color of the solution. Element Y is in period 3 of the periodic table. It forms chloride that is liquid at room temperature. That means element Y, when it react with chlorine, it form chloride. We are not sure what is the formula of chloride, okay? But this is liquid. So liquid agar hai, that is mentioned in the question. If it is liquid, it must have a covalent structure, a simple molecular. If it is simple molecular, then Y must be a non-metal, because non-metal, only non-metals react to form covalent bond. ठीक है? तो ये ग्रुप 1 और 2 में तो नहीं हो सकता. It could either be in group 5 or 6. ठीक है? Sorry, 4 and 5. Yep. आज मुझे ये बताएं कि ग्रुप 4 के जो होते हैं, ग्रुप 4 वाले, फॉर एग्जांपल कार्बन है, is in group 4, silicon is in group 4. इनके ऑक्साइड्स क्या एम्फोटेरिक हैं? ये तो एसिडिक है. ठीक है? तो एम्फोटेरिक C भी निकल गया. ग्रुप 6 हो सकता है, और ग्रुप 6 वाले लेट्स से सल्फर है. सल्फर इज इन ग्रुप 6. तो सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या है? एसिडिक. D must be correct. So again, a complete understanding of the periodic table, that where's the metal, what type of oxides are acidic and alkaline and amphoteric. We have two amphoteric part of our syllabus, aluminum oxide and zinc, and both of them, they react both with acid and alkalis. Amphoteric किसे कहते हैं? Substance that reacts both with acid and with alkali. Make sense, everyone? Correct? Yes. Yes. Good. Okay. Number 65. It's very easy. Like, if you read the examiner report, most of the question got wrong here. I mean, students were unable to solve this question. Yeah, Rania. Okay, so the diagram shows an experiment to determine the percentage of oxygen in air. Let's do the composition of air. 78% nitrogen, 21% oxygen, and in other 1%, we have argon, the most abundant among noble gases. We have carbon dioxide, we have water vapors, and other gases. But in air, oxygen makes 21%. So you're burning a candle here, and we know burning happens only with oxygen. So जैसे जैसे burning होगी, इस पूरे में से oxygen खत्म हो जाएगी. तो इस पूरे का 20% क्या मतलब है? अगर this is the volume of gas, if this is the volume of gas, you see this is the gas, air है ये. इस air का 21% कितना होगा? 21% इतना तो होना चाहिए. ठीक है? तो मुझे बताएं इतना वॉल्यूम कहाँ पे कम हो रहा है? सी में कम हो रहा है, और तो किसी में भी नहीं कम हो रहा. देखो इतना सा कम हो गया उसका वॉल्यूम. करेक्ट? यस. यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 50% हो गया. Organic आ गई. A series of reaction producing propanol from naphtha. Now naphtha is something that is component of crude oil. What is the use of naphtha? Anyone in the class? The use of naphtha? Making polymers. It is used as a chemical feedstock. Yeah. So naphtha is used to make chemical, as a raw material to make chemicals. So make sure you review the entire thing in crude oil, that fractions and their uses and the trends when you go top to bottom in the fractionating column. I mean, when you go top to bottom in column, the number of carbon atom increases, melting and boiling point increases, and density, viscosity increases. There is only one factor that decreases as you go down, and what is that? It is the flammability. As you go down, excellent. As you go down, the ability to burn decreases. Volatility Also decreases. Volatility will decrease. Excellent. So naphtha is actually a big thing. I mean, hydrocarbon. So X must be cracking to break larger chain into smaller chain, to get smaller, more useful alkane, alkene, and hydrogen gas under high temperature and pressure. अच्छा, फिर क्या किया हमने? This alkene, which is propene, double bond is removed, and instead of double bond, now we have an alcohol. So this is alkene, goes to alcohol. Alkene, when goes alcohol, it is nothing but hydration with steam. Okay? In the presence of phosphoric acid, 200 atm and 200 degrees and 60 atm. So it is cracking, and the Wise reaction with steam A must be correct. It's not fermentation. Yep. The structure of 4 alcohols are shown. You see the 4 alcohols: methanol, ethanol,
propan-2-ol because there are 3 carbon, and if this is first carbon, this is second, this is third. The OH is attached with the second carbon, so this is propan-2-ol, and this is buten-1-ol. 4 carbons, and with the first carbon you have OH. Correct? Which statement is correct? Alcohol 4 has only one other isomer. मुझे बताएं कि इसके अलावा कोई आइसोमर बन सकता है या नहीं? दूसरा तो ये आइसोमर जो वो कर रहा है, एक ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 2, इसका कोई और आइसोमर बन सकता है या नहीं? यस और नो? नहीं बन सकता। सोच लें। बन सकता है ना यार, चेन आप छोटी कर सकते हो ना। देखो 3 कार्बन ये, तो आप एक ब्रांच लगा दो, फिर OH इधर लगा दो, देखो इसका थर्ड आइसोमर बन गया। इसका फोर्थ भी बन सकता है, C इधर है, उसी पे OH लगा दो, तो आप ब्रांच बना सकते हो। तो इट हैज मोर देन वन आइसोमर्स। इनकरेक्ट। अल्कोहल 3 इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कहां से आ गया भाई? एथेनॉल, ये कब से रीन्यूएबल हो गया? Alcohol 2 can be made from glucose. What is alcohol 2? It is ethanol. You know, we can make ethanol from glucose, formula C6H12O6. You can react it in the presence of yeast, anaerobic, 25 to 40 degree, and you can have ethanol. And what is the other product made in this fermentation reaction? Carbon dioxide. Correct? So ethanol, which is alcohol 2, can be made from glucose using fermentation. Alcohol 1 can be made by addition of steam into alkene. Alcohol 1 तो है ही methanol, तो कोई ऐसी alkene होती नहीं जिसमें एक कार्बन हो। alkene के लिए तो होने के लिए there should be 2 carbon, तो 2 carbon का मतलब ethene, और ethene से जो alcohol बनेगा वो तो ethanol होगा, methanol तो नहीं हो सकता। Which compound have the molecular formula C3H6O2? There must be 2 oxygens. Propanoic acid, CH3, CH2, COH, 3 carbons, 6 hydrogens and 2 oxygens. I think that makes sense. 1, 2, 3 carbons and 3 and 5 and 6 and 2 oxygens. I think that is correct. Ethyl methanoate. देखो एस्टर बनाना आता है ना, यूं लिख लिया, ये लिख लिया, एस्टर का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। अब आयल वाला पार्ट इस ऑक्सीजन के साथ आता है। इथाइल का मतलब 2 कार्बन आएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 3 आएंगे। मेथेनोएट का मतलब एक ऑक्सीजन तो है उस साइड पे। हाउ मेनी कार्बन डज दिस हैव? इट हैज 3 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन्स एंड 2 ऑक्सीजन्स। इसका भी फॉर्मूला। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो 1 and 2 आर आइसोमर्स, उसका भी तो यही होगा ना। कैसे आइसोमर्स है? ये मीथाइल एथेनोएट है, तो इधर से एक कार्बन बढ़ा दिया, इथाइल बन गया, और इधर से एक कार्बन कम कर दिया। एथ से मेथेनोएट और मेथ से एथ है, तो दे इन सब का फॉर्मूला सेम होगा। ऑल 3 आर करेक्ट, डी मस्ट बी करेक्ट। So they all have the C3H6 and O2. Esters, there would be a confirmed question, so don't forget to do esters. Which statement is correct? Complex carbohydrates. इसे इधर निकल गया हुआ carbohydrates, पहले पढ़ लेते हैं। Such as starch or hydrolyzed. I think ये बात ठीक है. It's an old question. I think मैंने 2019 से लिया था ये. Carbohydrates can be hydrolyzed to form sugars. तो ये बात ठीक है, but it has been removed. हम देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में। Fat have the same amide linkage as pterylene. Pterylene का modern name किसी को पता है? PET. PET में कौन सा linkage होता है? What is the linkage in PET? The linkage in PET. Ester linkage. It's ester linkage. Protein and nylon polymers are from same monomers. Protein have amino acid, nylon have dicarboxylic acid and diamine, not same linkage. Protein are natural polymers, also called polysaccharides. No, they are natural polymers, but never called polysaccharides. Nothing to do with polysaccharide to sugar hoti, but that has been removed. So forget about this. Repeat unit is given. Monomer क्या होगा? तो you can unfold. बस simple unfold करके match कर लो, किससे match कर रही? 2 carbons in the main chain, and 1 carbon has CH3 and the same carbon have hydrogen, and the other carbon must have bromine and chlorine. That should be the arrangement. I think A is correct. ठीक है? B इसलिए correct नहीं है because the carbon that has CH3, that carbon must have hydrogen. तो यहाँ पे तो Cl आ गया, incorrect.
इसमें Br आ गया, जो कार्बन के पास CH3 उसके पास तो हाइड्रोजन होना चाहिए, जिस कार्बन के पास CH3 उसके पास तो हाइड्रोजन होना चाहिए। Which statement is true about for the homologous series? True. Each homologous series contains saturated compound. ये कब से हो गया? Homologous series unsaturated की भी तो हो सकती है ना। Compound in each series are unreactive. ये कब से हो गया? Each series have a general formula. ये बात ठीक है। Each series has a graduation in physical property. ये भी ठीक है। So as you go down, we add more and more. So physical properties change हो रही होती हैं, chemical properties same रहती हैं because they have the same functional group that decide the chemical properties. They follow the same general formula as well. Butene reacts with bromine. That's a very good question. I mean, butene have double bond anyway. Let's put a double bond between the first two carbon. So when you add bromine into it, which means you are adding Br2 molecule. That is a very important chemical test. Help us to distinguish between alkane and alkene, saturated and unsaturated. In the presence of alkene, it goes from orange to colorless, correct? And both carbon that have double bond, they will get bromine. So the carbons which are adjacent, if you look at option D, एक ब्रोमीन इसके पास है, दूसरी इसके पास है, दैट मेक, ऐसा कैसे हो सकता है? ये एडजेसेंट कार्बन के पास जानी चाहिए। यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, इसको दे दिया, एक थर्ड कार्बन को दे दिया, यहाँ पे एक ही कार्बन को दे दिया। So this is correct because bromines are being added to the adjacent carbon and that is the only possibility because you can never add bromine in one and other on the third and fourth carbon. अगर ब्यूटवानीन होती तो ज्यादा आसान हो जाता ना। This is butadiene बेटे। अगर उस पे लिखा होता सवाल पे तो ज्यादा आसान हो जाता ना उसको guess करना। How many structural isomers with the formula C4H10O are alcohols? How many structural isomers? देखो ये अभी हमने बनाए थे ब्यूटेनॉल, तो कितने उसके आइसोमर्स बनाए थे? अभी बना लेते हैं। So we have butanol, तो पहले पे OH लगा दो, फिर सेकंड पे OH लगा दो। अच्छा अगर यहाँ पे भी लगाओगे तो वही रहेगा ना, तो मैं यहाँ पे लगा ही रहा क्योंकि तो फिर से 2H होगा। फिर हम इनके 3 कार्बन करते हैं और एक C इधर कर देते हैं और OH यहाँ दे देते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी। फिर C इधर करते हैं और इसी कार्बन में OH लगा देते हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती। अब यहीं पे भी लगाएंगे वही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि सर हम यहाँ पे लगा दें, इसी को OH दे देते हैं। इसको OH देने का मतलब है कि दिस इज द फर्स्ट कार्बन और दिस इज द मेन चेन। फर्स्ट कार्बन पे OH है और सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, तो ये तो वही चीज नहीं है, ये तो इन एग्जैक्ट यही चीज है। फर्स्ट कार्बन पे OH है और सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, ठीक है। और आई थिंक दैट्स ओनली पॉसिबिलिटी। टोटल नंबर ऑफ alcohols with different structures and with the same molecular formula are the 4. So here is the answer. Which statement about alcohols, which is again propanol, propan-1-ol is correct? Propan-1-ol is oxidized to form propanoic acid. This is correct. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। Am I audible? आपका सर बहुत खराब क्लियर हो, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है सबको मेरी? जी जी सर क्लियर। रिजवान भाई जरा इंटरनेट को पानी पिलाएं। सर इंटरनेट Propan-1-ol burns in air to form carbon dioxide. We know that whenever you burn any organic compound, doesn't matter कौन सा है, उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलता है। फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। Propanol can be formed by addition reaction of ethene and steam. मुझे बताओ ethene से which have 2 carbon, can you convert ethene into an alcohol with 3 carbon? तो ये थर्ड कार्बन कहां से आ गया भाई? This is incorrect. Only 1 and 2. A must be correct. Yep. Propanoic acid reacts with calcium carbonate. Products of the reaction is given. What is the correct equation? This is not even propanoic acid because it has 4 carbons. You see it has 4 carbons. This also have 4 carbons. They are butanoic. A और B are propanoic. अच्छा A इसलिए करेक्ट नहीं है बिकॉज इसका सॉल्ट इनकरेक्ट है। हाउ डू आई नो? कैल्शियम तो ग्रुप 2 में रहता है, इस पे चार्ज क्या आने वाला है? +2। और जो ऑर्गेनिक O8 आयन होता है उस पे इट इज ऑलवेज -1। इसका फॉर्म सॉल्ट का फॉर्मूला दिस इज करेक्ट। तो ये 2 यहाँ आना था और 1 यहाँ जाना था, इसका मतलब B हैज टू बी करेक्ट। मेक सेंस एवरीवन? बाकी ठीक है। C D तो वैसे निकल गए, दे आर नॉट इवन propanoic. A and B are correct. So B में you must consider the correct formula of the salt. Esters again. An acid reacts with alcohol to form ester and water. So this side comes from alcohol and this beautiful side comes from ester. I mean, sorry, carboxylic acid. इसका नाम क्या है? Ethyl, because 2 carbons हैं,
और 3 कार्बन हैं तो प्रोपेनोएट। मेक सेंस एवरीवन? ओके, इथाइल प्रोपेनोएट कहीं मैच कर रहा है तो फिर बी होना चाहिए ना। और इथाइल का मतलब है कि ये एथेनॉल से बना है, वो आपसे रिएक्टेंट भी पूछ सकता है ना। एंड इसका मतलब ये कि ये प्रोपानोइक एसिड से बना है, इट इज फॉर्म फ्रॉम प्रोपानोइक एसिड। मेक सेंस एवरीवन? ओके, नंबर 76। चाहिए देखो ना, स्कैम करने की कोशिश कर रहा है आपको, कैसे कर सकता है? हमारे साथ तो स्कैम कर ही नहीं सकता। यू हैव 2 कार्बन्स, सेम 2 कार्बन्स, सेम 2 कार्बन्स, सो दिस इज योर रिपीट यूनिट। देखो, द 1 कार्बन, it has 1 CH3 and the same carbon have hydrogen. The other carbon, it has the CH3 and it has the hydrogen. And the carbon which are part of the chain must have a double bond. Okay, if you start with A, the carbon that have double bond, they have hydrogen. उसके बाद दोनों ही हाइड्रोजन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने ऊपर डिसाइड किया है कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन है which is part of the main chain, it must have 1 hydrogen and 1 CH3 and hydrogen. ये भी नहीं हो सकता, it has 2 hydrogens. इसमें तो totally 2 carbons. This is correct because the carbons which are part of the polymer, which is always a double bond, it have 1 hydrogen and the same carbon have 1 CH3. 1 hydrogen and the same carbon have 1 CH3. So this can polymerize to form this structure. So D must be correct. The water supply can be purified by the filtration and chlorination. Which substance remains in water after these treatment? Chlorination kills bacteria, filtration removes the harmful substances, I mean the solid particles. So it still contains mineral salt. You know, you cannot remove salt, mineral salt, by filtration because filtration only remove large insoluble. And chlorination, देखो filtration से sand निकल गई, chlorination से ये निकल गया, solid भी निकल गया filtration से. So even after these 2 processes, you still have salt. So what process do we need to do to remove the mineral salt? क्या कर सकते हैं mineral salt को remove करने के लिए? सर evaporation करेंगे। Evaporation से कैसे निकल जाएंगे यार? Distillation से करेंगे ना। Anyone in the class? What is the first step of purification? Sir, distillation. Come on. So we can do. शाबाश, इब्राहिम भी क्लास में। Desalination. Desalination, पहले filtration करना है भाई, पहला स्टेप सुन ले सब लोग। दूसरा desalination है, sedimentation भी इसको कहते हैं, sedimentation। थर्ड स्टेप है chlorination, क्लोरीन ऐड कर दो और फोर्थ में कार्बन ऐड कर दो। This is used to remove the insoluble solids, filtration. Desalination or sedimentation is done to remove small dissolved salts. Chlorination is done to remove kill the bacteria, and carbon is used to remove bad taste and smell. Methane and sulfur dye. Methane is a greenhouse gas with the formula CH4 and sulfur dye is an acidic gas, SO2, are 2 pollutants in Earth's atmosphere. इसका क्या source है? Methane is decaying of plants. Sulfur dioxide कहाँ से आती है? Volcano eruption. Source इसका photochemical reaction. So source इसका है volcano eruption and methane is from decaying. So which conversion involve oxidation? Ethanol से carbon dioxide water बनाइए तो combustion है। जब भी आप किसी चीज से carbon dioxide water बनाते हैं तो that is combustion. Ethanol से ethanoic acid is oxidation with KMnO4. Ethene से polyethene तो addition है। Only 2 का option है कोई? Thank you. 80 and 81 everyone. 80 and 81. Done. All right. Compound T reacts with magnesium. इसका मतलब compound T something that has H plus sign और alkali से भी react कर रहा है ethanol से, तो compound T should be an acid. क्या होना चाहिए? Acid react with metals, acid react with alkalis, and acid also react with alcohol to form ester. So it should be an acid, and that is the functional group of acid.
Makes sense, everyone? What type of reaction could be used in the polymerization of ethene? Ethene is polymerized in an addition reaction. Correct? Insulin किसमें बेटा? I mean, ethene की कैसे esterification कर सकते हैं बेटा? How can you, do नहीं सर, esterification? इससे पहले वाला क्वेश्चन. So, do you think ester reacts with this is an ester? This is an ester because you have oxygen in the middle. On both sides, you have carbon. Never saw any reaction when ester is reacting with magnesium, and there's no reaction in our syllabus. There is no reaction. It is the acid that react with metals and alkalis and ethanol. This is ester. This is carboxylic acid. This is alkene, and this is alcohol. So only acid have that characteristic ability to react with all three. That's why C is correct. Insulin is a protein made in human body. Which statement about insulin is correct? अब हमने insulin को क्या assume करना है? It's a protein. It's a condensation polymer. Correct. It's a synthetic polymer. No, it's a natural polymer. When hydrolyzed, it produces only one monomer. It does produce one monomer, which is amino acids. Yep. Okay. It contains amide linkage. ये बात भी ठीक है. It contains amide linkage. Okay. दोबारा पढ़ना पड़ेगा. Synthetic polymer तो नहीं है ये. ऐसा ही है. So if it is not a synthetic polymer, then third को हम देख लेते हैं. When hydrolyzed, one monomer नहीं बनाती, one type of monomer हम कह सकते हैं because amino acid बनाती है. प्रोटीन को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, प्रोटीन इज हाइड्रोलाइज टू फॉर्म two amino types of acids. monomers निकलते हैं. Not two type, but variety of type, because every amino acid has a different carbon chain. You remember, जब हम amino acids कर रहे थे, तो हर box was different. Some boxes were shaded. On one side you have carboxylic acid, on one side you have NH2. अच्छा, जो next वाला box था, वो हो सकता है यूं shaded हो, और so it does form the amino acid, but not of one type. Variety of types of amino acid, not one monomer. So I think this is also incorrect. C must be correct answer. Sir, ये hydrolyze का मतलब क्या होता है? I mean, this has been removed. कि hydrolyze का मतलब होता है उसको ब्रेक कर दिया आपने. प्रोटीन को ब्रेक करके आपने अमीनो एसिड बनाया, अमीनो एसिड को कनेक्ट करके आपने प्रोटीन बनाया. वेरी सिमिलर. लाइक आपके पास एक दीवार है, आपने ईंटें जोड़ के दीवार बनाई, दीवार तोड़ के दोबारा ईंटें बना ली. तो breaking of polymer is called hydrolysis. But this has been removed. Two reactions are shown. In reaction 1, you see we are adding a hydrogen molecule into an unalkene in the presence of nickel. तो compound X में क्या होगा? Double bond will be removed. यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन आ जाएगा. Wait, what? ये तो compound reaction 1 में reactant ही incorrect लिखा हुआ है. How can this has a double bond? Let me draw the displayed formula. This OH must not be here. क्योंकि इसके तो 4 पूरे हुए हैं. So CH2, देखो क्वेश्चन इनकरेक्ट है. अगर बेटा इसको मैं डबल बॉन्ड लिख दूं यहाँ पे और फिर डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ गए, तो OH कहाँ से आएगा? OH की तो कोई स्पेस ही नहीं है, और एक हाइड्रोजन इसके पास है. फिर OH में कैसे 5वां बॉन्ड लगा दूं इसके साथ? आई थिंक यहाँ पे OH2 नहीं आना चाहिए, एक ही हाइड्रोजन आना चाहिए. दैट वाज इनकरेक्ट चीज लिखी हुई. लेकिन एनी हाउ जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बोथ कार्बन दैट हैज हाइड्रोजन दैट हैव डबल बॉन्ड, दोनों के पास हाइड्रोजन आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. तो कंपाउंड Y मस्ट बी CH2 CH3. फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये CH2 नहीं हो सकता ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे है क्योंकि टर्मिनल पे तो कभी नहीं हो सकता. तो ये स्ट्रक्चर ही इनकरेक्ट है. आई डोंट नो उसने इंटेंशनली बनाया हुआ है. देख लेते हैं आगे. इन सबको नीचे ले जाए. Okay, compound X is then oxidized to give you compound Y. ठीक है. अब मुझे बताएं कि ये देखो डबल बॉन्ड, इमेजिन डबल बॉन्ड रिमूव हो गया बट OH is still there. That mean ये जो X है इसमें अल्कोहल लिंकेज अभी भी है. तो जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा with 3 कार्बन एटम. ये देखो इसमें 3 कार्बन है ना. तो नेम ऑफ कंपाउंड X मस्ट बी प्रोपेन 1 ऑल. 3 कार्बन्स हैं तो इट शुड बी प्रोपेन 1 ऑल.
और जो कंपाउंड Y होगा इट हैज टू बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेक सेंस एवरीवन? इसमें असल में ये जो रिएक्शन 1 का रिएक्टेंट है ना, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में आना है, यहां नहीं आना। यहां तो डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस कार्बन के पहले से 2 हाइड्रोजन है और फिर OH कहां से लगा दिया, 5th बॉन्ड बन जाएगा ना, विच इज नॉट पॉसिबल। तो वो यहां पे है डबल बॉन्ड। कैम्ब्रिज में भी मिस्टेक हो सकती, देख लो। A section of structure of protein is shown. Okay, so we know that this is imide linkage, and polyimide hota hai. How many amino acids monomer molecule have been used to make this section of the structure? How many? Okay, एक ये है, आप देखना कैसे रिपीट हो रहे हैं, फिर नाइट्रोजन से C तक, फिर नाइट्रोजन से C तक, और फिर नाइट्रोजन से, तो कितने? How many? 4 ही है ना, देख लो 4 रिपीट हो रहे। सेम कहीं से आया। वेट व्हाट, क्या कह रहे हो? सर मुझे बी लग रहा है, लाइक क्यों बी लग रहा है? 4 बार रिपीट नहीं हो रहा, आप देखें ना बेटा, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये सेम स्ट्रक्चर मैंने ओपन करके लिख दिया आपके सामने। आपने नाइट्रोजन से स्टार्ट किया, फिर यहाँ नाइट्रोजन आया सेकंड, फिर नाइट्रोजन आया थर्ड, और फिर नाइट्रोजन आया फोर्थ। मेक सेंस? इट शुड बी सी, 4 टाइम रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं लास्ट फेज ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ पेपर 1, आई मीन MCQ पेपर 2 फॉर IG एंड पेपर 1 फॉर O Levels। लास्ट फेज इसका है फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, वेयर यू विल बी टेस्टेड विद योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ apparatus. There will be 1 question or 2, and test of cation, and where most of us struggle. But I want कि आप स्ट्रगल ना करें उसमें, क्योंकि मैं बड़े दिनों से आपको कह रहा हूं कि आप सब ने रिव्यू करने हैं, याद करने हैं आयंस, टेस्ट ऑफ आयंस एंड कैटायंस, करेक्ट? तो आप सबको ये आने चाहिए ना। 85। सो मुझे बताएं कि विच apparatus exactly measures in points 27.3. Burette is the only accurate apparatus which is sensitive up to 0.1. Measuring cylinder रफ वाले पाइपेट भी एग्जैक्ट मेजर करता है, कंडेंसर तो मेजरमेंट के लिए होता ही नहीं है। A student titrates aqueous sodium hydroxide with 0.1 mole of HCl. So NaOH की titration कर रहा है वो with this much concentration of HCl. The titration results in the used to calculate the concentration of, इसकी concentration given है, इसकी हमने find कर। Which row is correct? Apparatus to measure the volume of HCl. देखो जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो एसिड को हम ब्यूरेट में लेते हैं, और जो एल्कली होती है उसको कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं, टू एंड वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ एल्कली विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट। बी मस्ट बी करेक्ट, ठीक है। Chromatography. Chromatography is an important technique, and I want everyone to know the entire thing, starting from why do we use pencil, draw the baseline with pencil, what solvents are normally used, why there is a need to cover it on the top, and what is the formula of the RF. A mixture of 4 colored dyes is analyzed by chromatography. The results are shown. That is solvent front, baseline. That mixture contains 3 impurities, 1, 2, and 3. 3 different components. Which change allows the 4th dye to be seen? देखो वो कह रहा है कि ये 4 लोगों से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही नजर आए। तो हमें क्या करना चाहिए? Whenever you with one solvent, let's say हम यहाँ पे water use कर रहे हैं, you didn't get the desired result, तो फिर आप क्या करोगे कि वो 3 के बजाय 4 विजिबल हो? क्या करेंगे? You would change the solvent, measure the RF value of the spot। तो उससे 4th का कैसे पता चलेगा? उसने कहा है 4th dye to be seen. How do we know the 4th? Run the chromatogram for longer time. जितना मर्जी longer time वो तो separate ही नहीं हो रहे। Run the chromatogram using a different solvent. Locating agent can not help us because वो 3 हो गए तो 4th को भी visible होना चाहिए। An aqueous solution of contains cations of metal X. A precipitate is formed when a few drops of sodium hydroxide is added. लेकिन उसने कलर नहीं बताया हमें। Precipitate dissolve in excess. ठीक है। What is the possibility of metal X? अच्छा, that's an excellent question which will test your understanding and knowledge of the complete cations test. देखो, अगर वो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम NaOH से रिएक्ट करके बनाता है प्रेसिपिटेट। अब मैं आपको मजे की चीज बताऊं, फ्यू ड्रॉप्स में प्रेसिपिटेट बनाता है,
तो आप सबको प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेट उसी चीज के हाइड्रोक्साइड होते हैं। एल्यूमिनियम में जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH डालें यू गेट व्हाइट पीपीटी एंड दोज व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व इन एक्सेस। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हो सकता है, देखो उसने लिखा हुआ है प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन एक्सेस, एल्यूमिनियम हो सकता है। अमोनियम, अमोनियम में तो हमारे पास देयर इज नो प्रेसिपिटेट। अमोनियम में तो सिंपली यू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड, you just warm the solution and you will get ammonia gas, there is no precipitate। तो ये भी निकल गया, उसने precipitate लिखा, फिर तो यही होना चाहिए। Zinc and aluminum have the same test with sodium hydroxide, both form white PPT, they dissolve in excess, but zinc show the similar result with aqueous ammonia of white PPT dissolve, लेकिन aluminum के white PPT dissolve नहीं होते with aqueous ammonia, so zinc and aluminum form white PPT, dissolve in excess, and aluminum does not form any precipitate। Element X is in group 1. Some statements about the X are given. It is not the least dense element in 1. देखो density top to bottom increase होती है, ठीक है, so it is not the least। इसका मतलब ये lithium तो नहीं है, lithium is the least dense। It is more reactive than potassium, top to bottom reactivity increase होती है, तो more reactive का मतलब है कि potassium के नीचे पड़ी हुई। It has an IR value less than 100, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ना तो लिथियम है ना सोडियम है, इन दो में से किसी का IR चेक करो किसका लेस देन 100 है। आई थिंक इट शुड बी रुबिडियम, बट लेट्स कंफर्म। रुबिडियम ही है, सीजियम का तो मेरे ख्याल 100 समथिंग होता है। क्या है भाई? रुबिडियम इज 85 and cesium is 132, so AR less than 100 is of rubidium। Make sense everyone? Correct? Yes, again a knowledge examiner is testing your complete knowledge and understanding from the periodic table, its trends and everything, so make sure कि आप सुन रहे हैं और मेरे साथ connected हैं सब लोग। Yes, when heated copper 2 sulfate crystals, copper 2 sulfate crystals को जब हीट करेंगे तो copper 2 sulfate hydrated का कलर क्या होगा? ब्लू। हीट करेंगे वाटर उड़ जाएगा तो ये व्हाइट रह जाएगा, ठीक है, ये ब्लू था। वाटर ऐड करेंगे फिर से ब्लू हो जाएगा, तो रिवर्सिबल होता है। व्हेन हाइड्रस और एनहाइड्रस, देख लेते हैं पूरी स्टेटमेंट, लेकिन कॉपर 2 सल्फेट विच इज, क्या मतलब, इन द प्रेजेंस इज हीटेड फ्रॉम copper 2 sulfate which is in appearance। So when hydrated copper 2 sulfate which is, देखो हाइड्रेटेड होता है ब्लू, तो ब्लू होना चाहिए, ठीक है, ब्लू होना चाहिए इसको। वैसे तो ये क्रिस्टल्स बनते हैं इसके, तो यहाँ पे तो ऑप्शन डी ही करेक्ट लग रहा है, पाउडर तो नहीं होता ना, क्रिस्टल्स होते हैं, डी होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। तो व्हेन 1 पे आएगा हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट विच इज ब्लू एंड क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, विच इज ब्लू क्रिस्टलाइन इन अपीयरेंस इज हीटेड फ्रॉम एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट, इट फॉर्म्स एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट। तो एनहाइड्रस का कलर क्या होता है? वो जो एनहाइड्रस होता है वो जब वाटर एवेपोरेट हो जाता है तो इट टर्न्स पाउडरी, तो इट शुड बी डी, राइट। हाइड्रेटेड फॉर्म में वो क्रिस्टल्स बनाता है, और व्हेन वाटर एवेपोरेट्स तो पीछे यू लेफ्ट द पाउडर कॉपर 2 सल्फेट। अजीब सी स्टेटमेंट है, कंफ्यूजिंग। कंपाउंड Q is soluble in water, compound Q is soluble, compound Q gives white PPT। इसका मतलब ये कि या तो ये एल्यूमिनियम है, या जिंक है, या कैल्शियम, ये तीनों व्हाइट पीपीटी बनाते हैं। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड से, मैं समझा NaOH से बना रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड से इसका मतलब सल्फेट आयन। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये है कि वो सल्फेट आयन के साथ मिलके व्हाइट पीपीटी। अब मुझे बताएं कौन कौन से लोग हैं जो सल्फेट के साथ इनसॉल्युबल रहते हैं? LCB, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट, ये तीनों व्हाइट पीपीटी बनाते हैं। तो जो कंपाउंड Q है उसमें या तो कैल्शियम है या बेरियम है, तो अमोनियम तो नहीं हो सकता। अच्छा, बेरियम क्लोराइड हो सकता है। अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं। व्हेन Q is warmed with aqueous NaOH and aluminum foil, a gas is produced, ठीक है। तो आपको पता है
कि नाइट्रेट वो लोग होते हैं जिनमें अगर आप NaOH डालें, हाइड्रोक्साइड आयन, और साथ में एल्यूमिनियम फॉयल डालें और इसको वार्म करें, वहां से अमोनिया गैस निकलती है। अगर अमोनिया गैस निकले, इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रेट आयन थे, तो इसका मतलब नाइट्रेट ये है, बेरियम ये है, तो इट शुड बी डी, क्लोराइड नहीं हो सकता। मेक सेंस एवरीवन? 3 liquids XYZ tested with results are shown. Add anhydrous cobalt 2 chloride blue to pink. इसका मतलब ये कि वो X जो है वो वाटर हो सकता है, उसमें वाटर हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट उसका एग्जैक्ट 100 है, तो वो प्योर वाटर है। इसका मतलब Y इज नॉट वाटर, क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा, और 78 का मतलब ये अल्कोहल है। अच्छा, अल्कोहल का तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो मुझे ये बताएं, हाँ ये तो आई मीन वाटर नहीं है, कंपाउंड Y इज नॉट वाटर। ये भी ब्लू टू पिंक हो रहा है, तो ये वाटर है, लेकिन इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर है, तो ये कौन सा वाटर है? ये इम्प्योर वाटर है, बिकॉज वी नो दैट impurities increases the boiling point, decreases the melting point. So X is pure water, C or D. Y is not a water and Z is impure water. This was easy. Make sense everyone? In a titration, a 25 decimeter cube cm cube and 0.1 mole NaOH is exactly neutral by this much volume of dilute sulfuric acid. What is the concentration? Moles का question है। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसने सारा कुछ दिया हुआ है, which is C and B. C is 0.1. You see, C is 0.1 and V is 25. 25 over 1000 because it is in centimeter cube. So क्या आंसर आएगा मॉस? 25 over 1000 is how much? 0.1 times 0.025. So you see the moles of NaOH इसमें कितने आए हैं? 2.5 times 10 raised to negative 3. अब हमारे पास NaOH के मोल्स आ गए, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स 1:2 है ना। यू सी सल्फ्यूरिक एसिड reacts with sodium hydroxide in a ratio 1:2. You can see from the balance equation. अगर इसका 1 है तो इसके 2 नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मेरे पास? 2.5 times 10 raised to negative 3, और इसके उसके इसका 2 है, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब सिंपल उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितने आए? ओहो, 0.0025 0.0025 over 2, तो 1.25 into 10 raised to negative 3। ये सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स आ गए। अब सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम उसमें क्वेश्चन में गिवन था, सो अब हमने फाइंड करनी कॉन्सेंट्रेशन इज N over V, since we know that N is C times V. If we need to get the concentration, we need the volume and moles. Number of moles हमने फाइंड कर लिए। वॉल्यूम यहाँ पे स्कैम हो सकता है, वॉल्यूम cm क्यूब में dm में कन्वर्ट करना है इसको, should be 0.0162, तो over 0.0162, तो 4 पॉइंट है। मेरा आंसर तो नहीं गलत आ रहा, तो 0.00125 over 0.0162 is how much? 0.0772. B must be correct. Make sense everyone? तो कैलकुलेटर देखो, कभी आप हम सारी वैल्यूज वैसे ऐड करते जाए ना, आंसर डिवाइड बाय दिस। मेक श्योर कि हर स्टेप के बाद उसको टेयर करें एंड देन यूज, बिकॉज यहाँ पे मैंने देखा, बहुत बार मैंने देखा है, तो पंगा कर जाता है कैलकुलेटर। करेक्ट? यस, ओके। Two statements are shown when ethanol is made from glucose by fermentation. Each glucose molecule produces 2 molecules. ये बात ठीक है। So देखो यार, ये ग्लूकोज है C6H12O6। When देखो, so we have glucose here and glucose से क्या बनता है? You get ethanol, 2 moles of ethanol. ये बैलेंस इक्वेशन भी याद होनी चाहिए, and 2 moles of carbon dioxide. So 2 moles of ethanol statement is correct. Yes. When ethanoic acid made from ethanol act as a reduce. देखो आप ethanol को KC2H5OH इसका रिएक्शन कर रहे हो with KMNO4. KMNO4 is an oxidizing agent. मुझे बताएं, ये अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर ये क्या होगा? It should be a reducing agent. तो ethanol act as a reducing agent, ये बात भी ठीक है। Statement 1 both 2 A must be correct, बाकी करेक्ट नहीं है। 95. A scientist heats a sample of liquid. एक लिक्विड को उसने हीट किया। The scientist made the temperature of a sample and plots a graph. ये टेम्परेचर है, ये टाइम है, W पे वो सॉलिड है। अच्छा, लिक्विड को हीट किया,
तो यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ, फुली बॉयल, और Z पे it has become a gas. Which statements are correct between W and X? Between W and X, which is this thing, liquid है, temperature increases and the particles move faster. ये बात ठीक है, liquid में energy उनको मिल रही है, they move पहले से ज्यादा faster. Between X and Y, there is no change in temperature, and there is no change. You see line become horizontal because energy is used to break the bond and energy is used to break the forces of attraction. Liquid से gas में ये भी ठीक है. Between Y and Z, particles move further apart. ये भी ठीक है. यहाँ पे वो liquid था और यहाँ पे वो gas particle move further apart. All three are correct. Which particle are the isotope? Isotopes की definition है atoms of an element. Atoms का मतलब they must have the same proton and electron, but different neutron. तो W, देखो protons इन दो के सेम है और इन दो के भी सेम है. तो क्या इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है? इन दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकते. देखो इनके प्रोटॉन्स भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. X and Y, Y and Z. D must be correct. Make sense, everyone? Yes. The diagram shows the four pieces of apparatus that are used to measure the volume of liquid. Which apparatus always fill to the same level? Same level पे होता है जिसके एक ही graduation होती है. इसको तो हम जहां पे मर्जी तक fill कर सकते हैं, जहां आपका दिला, because it can read every reading. इसके ऊपर भी ग्रेजुएशन है, देयर इज मेजरमेंट. तो आप सेम लेवल पे कोई जरूरत नहीं है, इसको भी आप जितना मर्जी फिल कर सकते हैं, सेम लेवल पे उसी को फिल कर सकते हैं. अगेन अ टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द cations and anions. Thus we are left with few questions. I'm sure you all are connected. I appreciate your patience, and this is for you. Of course, you have paper. You will feel good, inshallah, after the paper. I know you will feel good. Those who are listening and writing taking the important notes, you will definitely feel good, inshallah, after the paper tomorrow. Inshallah. The table shows the results of a series of tests with two substances X and Y. तो ये टेस्ट विद X है, टेस्ट विद Y है. पहले हमने नाइट्रिक एसिड ऐड किया, फिर सिल्वर नाइट्रेट ऐड. नाइट्रिक एसिड से कोई चेंज नहीं आया और सिल्वर नाइट्रेट से व्हाइट पीपीटी. इसका मतलब X में क्या है, जब भी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से 3 प्रेसिपिटेट आते हैं, व्हाइट, क्रीम और येलो. व्हाइट आएंगे तो क्लोराइड है, क्रीम आएंगे तो ब्रोमाइड है, और येलो आएंगे तो आयोडाइड है, क्योंकि प्रेसिपिटेट बनते हैं सिल्वर हेलाइड के. तो ये सिल्वर हेलाइड. और इसमें नाइट्रिक एसिड नो रिएक्शन, इसका मतलब इट डजंट कंटेन कार्बोनेट आयन. नो कार्बोनेट और नो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब नो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्योंकि प्रेसिपिटेट ही नहीं बने. फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, व्हाइट पीपीटी बने इनसॉल्युबल इन एक्सेस. तो 3 लोगों के व्हाइट पीपीटी बनते हैं NaOH के साथ. किसके? एल्यूमिनियम के, जिंक के और कैल्शियम के. इन 3 लोगों के व्हाइट पीपीटी बनते हैं. इन दोनों के पीपीटी डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेस में, इसके नहीं होते. इनसॉल्युबल इन एक्सेस का मतलब है कि ये कैल्शियम है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें क्लोरीन भी था. नो प्रेसिपिटेट, नो कार्बोनेट. अब उसने किया देन ऐड एल्यूमिनियम फॉयल, नो गैस. इसका मतलब इट डज नॉट हैव नाइट्रेट, नो नाइट्रेट. अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, फिर एल्यूमिनियम फॉयल ऐड किया, फिर हीट किया, कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हुई, इसका मतलब नाइट्रेट आयंस नहीं है. अच्छा, वाई में अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब वाई में नाइट्रेट आयंस आर प्रेजेंट. ठीक है. फ्लेम टेस्ट किया, इसका ऑरेंज रेड फ्लेम है और इसका येलो फ्लेम है. येलो किसका होता है? सोडियम का. ऑरेंज रेड किसका है? बेरियम का. ओके. तो अब हमने ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, हम करीब ही पहुंच गए. सॉरी, इसका तो कैल्शियम का होता है ना, ऑरेंज रेड तो कैल्शियम का है, तो कंफर्म हो गया कि ये कैल्शियम ही है. ओके. तो एक्स में हमने क्या आइडेंटिफाई किया? एक्स में हमने क्लोराइड आइडेंटिफाई किया, तो इट कुड नॉट बी ए और डी. यस, सॉरी, हाँ, ये तो ब्रोमाइड है ना, ए तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक्स में हमने क्लोराइड आइडेंटिफाई किया और एक्स में हमने कैल्शियम भी किया, तो बी सी डी सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं. वाई में हमने क्या आइडेंटिफाई किया? वाई में हमने आइडेंटिफाई किया इट कंटेन नाइट्रेट आयंस and it contains sodium ions. So all entries of D is correct. D must be correct. Compound Q is a hydrocarbon, no structural isomer. Compound Q does not dechlorize in dark, bromine in dark.
What is compound Q? No structural isomer. That is something which we need to check. C3H6 ये एल्कीन है. C3H6 is एल्कीन. एक अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लगा दूं तो डबल बॉन्ड में नो स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं बन सकता, ये बात ठीक है क्योंकि ये दोनों सेम है. बट इट उसने लिखा हुआ डज नॉट डीक्लोराइज. ये तो डीक्लोराइज करती है बिकॉज इट हैज अ डबल बॉन्ड. C3H8 इसका कोई आइसोमर नहीं बन सकता एंड इट डज नॉट डीक्लोराइज. ये डीक्लोराइज करती है क्योंकि ये एल्कीन है, यू सी एल्कीन. और इसका तो आइसोमर बन सकता है ना 4 कार्बन के, तो आप 4 आइसोमर बना लें, अभी आपको बताया था. ये लो आइसोमर बन गया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, NPK, nitrogen potassium phosphorus, used as to improve the growth of the plant. A solid NPK fertilizer has the properties water soluble, has a solution of 7 neutral. Which substance are mixed to make NPK fertilizer? Potassium nitrate KNO3, sodium phosphate Na3PO4, phosphate -3 होता है. तो इनको अगर हम मिक्स करें तो इनमें क्या है, सब कुछ जो हमें चाहिए. It has N, it has P and it has K. I think यही ठीक होना चाहिए, बाकियों में ये नहीं होगा. ठीक है, if you look at the other options. So this was a little effort for you people just to understand and feel confident about tomorrow's paper. The amount of questions that we did in the past 2 or 3 months, I have no doubt कि आपको सारा knowledge है, but you just need to handle the pressure very carefully, and of course time management is extremely important. So I wish you best of luck. Please read the entire statement, underline wherever you feel struggle, आप कहीं पे struggle कर रहे हैं, leave that question and move on, and that save 5 or 10 minutes while the end of the paper and then fix those questions. Inshallah, 40 out of 40. Do share your feedback once you're done with the paper. See you inshallah. Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Hafiz Daniel bhai.